स्टूडेंट्स तो कम ही दिख रहे हैं मुझे, 17 स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, बट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कल मैंने रोका था उससे के आगे कॉन्टिन्यूशन में ला रहे हैं। इसके मैंने वीडियोस भी अपलोड कर दिए हैं बेटा आप लोग को, आप लोग उनके वीडियोस भी देखते रहिएगा, ठीक है, और उससे बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ताकि जो क्लास अभी हुई है और जो लोग छूट रहे हैं, जिनका छूट रहा है बेटा, वो भी उसको रिपीट कर लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हम लोग पढ़ रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ मोशन चैप्टर। जो मोशन चैप्टर है उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी अ यूनिट ऑफ स्पीड, विच कांट बी यूनिट ऑफ स्पीड। इनमें से कौन सा है जो स्पीड की यूनिट नहीं हो सकती? फर्स्ट वन किलोमीटर पर आवर, सेकेंड एस फॉर सेकेंड पर मीटर, थर्ड मीटर पर सेकेंड, and fourth that is D millimeter second minus 1। इनमें से कौन सा यूनिट है जो पॉसिबल नहीं है बेटा? देखो, किलोमीटर पर आवर, यस ऑफ कोर्स, किलोमीटर पर आवर इज द यूनिट ऑफ स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हेन यू टेक द डिस्टेंस इज इन किलोमीटर and time is in hour, then kilometer per hour. Okay, so kilometer per hour is the unit. Meter per second, when you take distance as in meter and time is in second, then meter per second. When you take the distance as millimeter and the time is in second, then millimeter per second. लेकिन सेकेंड पर मीटर ये पॉसिबल नहीं है बेटा, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो स्पीड की यूनिट नहीं हो सकती है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन is one of the following is not a vector quantity. One of it is not a vector quantity. Which one? First one, displacement. First one is displacement. Second is speed. Third one is acceleration. Third is acceleration. And fourth one is velocity. First we have to know what is vector quantity. Beta, there are two types of physical quantity. Any physical quantity can be divided into two parts. First one is scalar and the second one vector. First one is scalar and the second one vector. Scalar वो होते हैं किसी भी physical quantity को बताने के लिए we need two one. First one magnitude and the second thing direction. Now the physical quantities which require only magnitude for representation. Only magnitude means only numerical value. Suppose beta, I am going to school, from home to school, and the distance is 10, suppose 1 kilometer. Now 1 kilometer, when I am saying 1 kilometer, is it specified in which direction? It is north, south, east, west, where? So only we know that magnitude, that is numerical value, that is 1 kilometer. When I am saying I am moving with a speed of 10 meter per second, then we don't know what is the actual direction. So the physical quantities which only require magnitude, those are known as scalar. Mass, time, temperature, speed, distance, density, weight, these are scalar quantities. Now
those physical quantities which require both magnitude and direction, which require magnitude and direction, they are known as vector quantities. जिनको बताने के लिए magnitude और direction दोनों की जरूरत होती है, they are called vector quantities. Like displacement, like velocity, like acceleration, they all require magnitude and direction, so they are known as vector. So in this question, one of this is not a vector. So which is not vector? We see displacement is a vector, acceleration is vector, and velocity is vector. Speed is not vector. Understood? I hope this is clear to all. Next question is, which of the following could not be a unit of acceleration? Which of is not a unit of acceleration? What are the units? Look, first one, kilometer per second square, second, centimeter per second square, third, kilometer per second, and fourth, meter per second square. Beta, meter per second square, kilometer per second, this is the unit of speed, not acceleration. So this is not the unit of acceleration. I hope this point is clear to all. ये वाला पोर्शन पूरा समझ में आ गया. अब हम आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे. I am using beta S Chand book and numerical portion हम इसी में से करवा रहे हैं. The question says, it's a question number 41. A bus increases its speed from 36 km per hour to 72 km per hour in 10 seconds. You have to calculate acceleration. Beta, first of all, write the things which we have given. Actually, this is a MCQ question. The first option is 5 meter per second square. Second, 2 meter per second square. Third, 3.6 meter per second square. And fourth, 1 meter per second square. We don't confuse by the values given beta. आप बस solve करिए. First one, u is given 36 km per hour. Your first priority is beta to convert this kilometer per hour into meter per second. And how will you convert kilometer per hour to meter per second? By multiplying 5 by 18. When you multiply any number by 5 by 18, you get the answer is in meter per second. So 18 to the 36, that is 10 meter per second. This is initial velocity u. Now what about final velocity? v is equal to 72 km per hour. जहां से मोशन स्टार्ट करती है, बेटा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको कहते हैं बेटा हम लोग इनिशियल वेलोसिटी. और जहां पे मोशन बंद होती है, रेस्ट होता है, जहां पे मोशन क्लोज होता है बेटा, दैट इज फाइनल वेलोसिटी. वेट बेटा. हेलो. हाँ जी देव सर, आपको मैसेज भेजते थोड़ा सा देख करिए. मैंने आपको पहले भेजा था कि कौन से बच्चे जिसको एडमिट नहीं करना है. उसके बाद मैंने